Welcome to the KCS Academy. Today we will discuss 10 popular idioms in the English language. So let's get started. The first idiom for today is hit the sack, which means to go to sleep. Now, whenever somebody says that I'm going to hit the sack, means that they are going to sleep. Now, let's take an example. So let's take a sentence as an example here. I have to go wake up early tomorrow, so I'm going to hit the sack. I have to wake up early tomorrow, so I'm going to hit the sack. Let's take the next one. अगर हिंदी में समझें तो हिट द सैक का मतलब सोने जाना. ठीक है, जैसे हम बहुत थकान लग रही होगी तो हमने कह दिया ओके आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक. मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ. ठीक है, अब हम दूसरा इडियम देखते हैं. गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, which means to start all over again. So what this is generally used when you're probably trying to fix something, or you're trying to uh, make something, maybe a project or something, and after repeated attempts you're not able to do so, and you leave that task, or you have to start over again. Meaning that if you were probably trying to make something, but it isn't working the way you want it, so what happens? You have to leave it at that and start all over again, or start afresh to make it. So let's take an example here. So if the wireless charger I made doesn't work, I'll go back to the drawing board. So going back to the drawing board means actually to make a fresh start. So in this sentence, what it means is that the wireless charger that you had made probably isn't in working condition. It is not working the way you would like. So you would have to go back to the drawing board, means that you would have to again start making a new wireless charger, which would probably work. Okay? हिंदी में समझना है तो हम कैसे समझेंगे? हिंदी में हम इसे ऐसे समझेंगे, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि हमें फिर से कार्य शुरू करना होगा. जैसे मान लीजिए हम प्रोजेक्ट में सोलर कुकर बना रहे थे, फिजिक्स के प्रोजेक्ट में, ठीक है, लेकिन हमारा सोलर कुकर काम नहीं कर रहा किसी वजह से. तो क्या हुआ? हमें विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी फिर से हमें सोलर कुकर बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या उसमें दिक्कत है, फिर से बनाना पड़ेगा ताकि वो ठीक से काम करे. ठीक है, तीसरा आप देखते हैं, बाइट द बुलेट, to get something over. So which means to get something over with because it is unavoidable or inevitable. So when you say bite the bullet, it means that you have no other option except to complete that task or face the situation. Let's take an example. I hate facing interviews, but I better bite the bullet as I desperately need a job. So here the person is saying that even though he or she despises facing interviews or hates facing interviews, he or she has no choice but to appear for the interview in order to get a job that they desperately need. So here, bite the bullet idiom would be used. So I hate facing interviews, but I better bite the bullet as I desperately need a job, which means that I better face the interview even though if I despise it, because I need that job. हिंदी में समझें तो बाइट द बुलेट का मतलब किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करना या कोई चीज़ करना जो कि हम टाल नहीं सकते. ठीक है, जो हमें करना ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें नीट या प्री मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा, भले ही हमें वो एंट्रेंस देना अच्छा नहीं लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है.
राइट, लेकिन वो ज़रूरी है, सो वन हैज़ टू बाइट द बुलेट, ठीक है, यानी वो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। या अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे मसल्स बनाने हैं, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, राइट, सो यू हैव टू बाइट द बुलेट। अगर अच्छी अच्छी फिजिक चाहिए तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ओके, so I hope this is clear. Let's take the fourth idiom. Break a leg, which means good luck. So if somebody says break a leg to you, he or she is wishing you good luck. Let's take a sentence as an example. As I approached the stage to give my presentation, my friend shouted, break a leg. As I approached the stage to give my presentation, my friend shouted, break a leg, which means good luck. So in this case, we can see that as the person approached this stage, probably to give his or her presentation, his or her friend wished them good luck or shouted break a leg. हिंदी में समझना है तो हम कैसे समझेंगे? गुड लक तो आप समझ ही गए, तो ब्रेक अ लेग हम वहाँ यूज़ करते हैं, इससे गुड लक। जैसे कोई डिफ़िकल्ट टास्क करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, या कोई एंट्रेंस देने जा रहे हैं, या रिजल्ट देखने जा रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स विश करते हैं गुड लक, तो ये कह सकते हैं ओके, सो यू आर गोइंग टू चेक द रिजल्ट, ब्रेक लेग मीन्स गुड लक, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इडियम, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। तो हमने देखा, वी नोटिस दैट देयर वाज एन इडियम, राइट, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, which meant to start working on the project again or to start your work all over again. But here, call it a day means to stop working on something and leave it. Probably adopt another approach. So call it a day is different, which means stop working on something. Let's take a sentence as an example. If this also doesn't start the car, I'll call it a day and get a mechanic to fix it. So what this means is probably the person's car has broken down or is not starting. Usually in winters we notice that there are some starting problems with the car. So what it means is that even after repeated attempts I'm not able to start the car, I'll give up on this, or I'll call it a day and get a mechanic to fix the car because I have to go to work. Or probably get the car fixed so that I can get use the car for my needs. हिंदी में समझने के लिए stop working on something, call it a day का मतलब है, जैसे आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मॉडल बना रहे हैं या कोई गेम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप डिज़ाइन कर रहे हैं लेकिन अच्छे से नहीं डिज़ाइन कर पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश की, फिर हार मान गए, या यू कॉल्ड इट अ डे, आपने कोशिश की, ठीक है, नहीं हुआ आपसे, तो यू लेफ्ट द टास्क और किसी प्रोफेशनल को हायर कर लिया, ठीक है। अक्सर क्या होता है, जैसे हम लेट्स से हमारी कोई कंपनी है या आपने कोई स्टार्टअप किया, आप उसके पैम्फलेट्स या लोगोज डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है आप नहीं अच्छा बना पा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, आप कोशिश करेंगे, नहीं हुआ, you'll give it up and you'll probably hire another professional जो अच्छे से आपका काम कर सके, that would be calling it a day, ठीक है। या सिंपल टर्म्स में आपने बैंक एग्ज़ाम की तैयारी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की, 2-3 अटेम्प्ट आपने दिए, तब भी आपका नहीं हुआ, तो अपना पूरा कैरियर उसी एग्ज़ाम को तो देने में नहीं लगाएंगे ना, राइट। फिर ऑब्वियसली आप 2-3 अटेम्प्ट के बाद you'll call it a day और you'll give up on that particular entrance और दूसरे एग्ज़ाम्स देंगे या दूसरे अदर करियर ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करेंगे जो आप आसानी से कर सकें, ठीक है। लेट्स टेक अनदर इडियम नाउ, वंस इन अ ब्लू मून। सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो बहुत रेयरली ऑकर हो, रेयरली देखने को मिले, ऐसी फिनोमेना हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। सो एनी फिनोमेनन
that takes place very rarely, or any incidents that occurs very rarely, can be said to be once can be said to be happening once in a blue moon. So let's take a sentence. I am very conscious about what I eat. So it's only once in a blue moon that I eat fast food. Now this is indicating a habit that usually I avoid unhealthy food. So I'm very conscious about what food I eat, but it's very rarely that, I might eat fast food. So very rarely I do eat fast food, like grabbing a burger. Okay, I may grab a burger, or might have that milkshake. Okay, so in this case, since it happens very rarely, we can say that once in a blue moon I might decide to eat fast food. Okay, now हिंदी में समझना है तो हम कैसे समझेंगे? बहुत ऐसे बहुत रेयर सिचुएशन में चीज़ें होकर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में एक है ईद का चांद होना। अगर कोई बहुत दिनों बाद नज़र आता है, बहुत कम नज़र आता है, अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए, बहुत दिनों बाद नज़र आए। कुछ हद तक इस ईडियम के सेंटिमेंट्स वही हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम आपको देखने मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये वंस इन अ ब्लू मून है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि आपको कोई ऐसा फिनोमिनन दिखा, जैसे दो प्लैनेट एक ही लाइन में अलाइन हो गए देखने में, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑकरेंसेस हैं, कई वॉल्केनोज हैं जो कभी कभार एक्टिव हो जाते हैं, कई सालों साल डोमेंट होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा है जो हमेशा घर पे पड़ते ही रहता है, जल्दी कहीं बाहर नहीं निकलता, रेस्टोरेंट उसमें नहीं जाता, लेकिन कभी उसने आपने देखा कि कभी कभार जो है वो भी बाहर निकला, घूमा, राइट। सो आप कह सकते हैं कि ही इज़ यूजुअली he or she usually stays at home, but once in a blue moon he also can be seen going outdoors to a restaurant, okay, or once in a blue moon he visits a restaurant, ठीक है, या कोई बहुत पढ़ाकू है, he usually studies, he's usually confined to his home studying late hours, but once in a blue moon you can spot him in the evening strolling in the park or chatting with friends, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर हो, कुछ ऐसे फिनोमिनन भी हैं, ठीक है, यू कैन से दैट ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादातर पानी नहीं बरसता, ठीक है, यूजुअली इट्स ड्राई एंड एरिड, लेकिन कभी कभी बहुत सालों में पानी अगर बरस गया वहाँ पे, तो यू कैन से दैट यूजुअली द वेदर इज़ ड्राई हियर, बट वंस इन अ ब्लू मून इट रेन्स, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट idiom. A dime a dozen, which means something which is common. So, an example, attractive deals and big discounts are a dime a dozen during Diwali. Now, Diwali is a very important festival in India, as many might be aware. So, it's common to see attractive deals and big discounts during the Diwali festival season, or for that matter, even during Holi. So, again, attractive deals and big discounts are a dime a dozen during Diwali or Holi. So what it means is, or if we talk about Europe, even during Christmas, you have a lot of deals there. Yes. So a dime a dozen means something which is common. Like for example, probably if you're talking about let's say for example we talk about a certain animal or a bird which is quite common in a place.
Sparrows are a dime a dozen in India. So Indian sparrows are quite popular. They are very common in India, right? That's why they are called Indian sparrows, by the way. So sparrows are very common in India. So you can say sparrows are a dime a dozen in India. Yeah. All right. Or you can say wall lizards are a dime a dozen in households. Yeah. So especially in India, you can definitely see a wall lizard, right? In most of the places. Yeah. So a dime a dozen means something common. हिंदी में समझना है तो हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जो आराम से दिख जाए, बहुत कॉमन हो, ठीक है। सो जैसे कि नई सड़क पे जो किताबों का फेयर लगता है, राइट। सो इट इज़ अ डाइम अ डजन टू सी सेकेंड हैंड बुक्स बीइंग सोल्ड एट नई सड़क ऑन संडे। तो जो संडे बाज़ार लगता है वहाँ पे कॉमन है कि आप सेकेंड हैंड बुक्स आराम से वहाँ खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड बुक्स आर अ डाइम अ डजन एट नई सड़क रोड ऑन संडे बुक फेयर, ठीक है। सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर लेंगे कि जो चीज़ कॉमन है उसके लिए अ डाइम अ डजन यूज़ करके। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट idiom. Cutting corners, doing something poorly in order to save time or money. Now, like I said, taking shortcuts, right? There's a saying that there are no shortcuts to success. So cutting corners is when you're doing something poorly, you know, not following appropriate procedure or adhering to standards in order to save time or save money, probably even resorting to some illegal means. So which often will definitely not give you good results, okay, or you might need to compromise on quality. So cutting corners means doing something poorly in order to save time or money. Let's take an example. Cutting corners will cause your products to be low in quality. Cutting corners will cause your products to be low in quality. So what it means is that if you are going to compromise on manufacturing standards, probably to save time or save money, your products will be low in quality or would be poor in quality. हिंदी में समझें तो कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में करना या पैसे बचाने के लिए उसकी जो इनपुट्स हैं उन्हें लो क्वालिटी का यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि ठेकेदार हैं, उन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने के लिए, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस ठेकेदार ने सीमेंट और बालू का प्रोपोर्शन कम यूज़ किया, बालू ज़्यादा यूज़ कर दिया, मान लीजिए 1:4 का मसाला है, जिसमें यूजुअली क्या होता है कि 1 बोरी सीमेंट में 4 बोरी बालू या रेत मिलाई जाती है, राइट। तो उसे कहते हैं 1:4 का मसाला। अगर मान लीजिए 1:5 या 1:6 का मसाला बना के उसने लगा दिया कि उससे पैसे बचा सके, तो क्या होगा, वो मकान में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकता है, राइट, उसकी दीवार कमज़ोर हो सकती है। सो अगेन वो ठेकेदार क्या कर रहा है, ही इज़ कटिंग कॉर्नर्स, ठीक है, या डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट इडियम। पुल योरसेल्फ टुगेदर means calm down. So pull yourself together means calm down. Example: stop shouting and pull yourself together. Stop shouting and pull yourself together. So probably your friend had a fight, had a tiff with somebody, and they're aggravated, probably shouting, and you're like, stop shouting and pull yourself together. Be calm. Okay, stop shouting, calm down, let it be. Let that person, ignore him, and let's get back to our work. Okay? So, हिंदी में pull yourself together means calm down, यानी अपने आप को संभालना। pull yourself together मतलब अपने आप को संभालना। कैसे कहते हैं हम लोग, अगर यही एग्जाम्पल हिंदी में हम डिस्कस करें, आपके दोस्त का झगड़ा हो गया, दोनों लगे लड़ने चिल्लाने एक दूसरे पे, तो आपने अपने दोस्त को कहा
संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो, स्कूल है, चिल्ला रहे हो फालतू का, अभी कोई टीचर देख लेंगे, अब दिक्कत में पड़ जाएंगे हम लोग, चलो क्लास में चलते। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब अपने आप को संभालो, काम डाउन। या कोई एग्ज़ाम में रिजल्ट आया, मार्क्स बहुत ख़राब निकले, बहुत दुखी हो गया आपका दोस्त, राइट? तो आपने उसको कहा, अब देखा कि संभालो अपने आप को, अब तो एग्ज़ाम दे दिए, हो गया जो रिज़ल्ट आना था, अब अगले एग्ज़ाम में अच्छा करो, ठीक है? सो अगर जैसे ग्रेजुएशन है या सेमेस्टर है तो ठीक है, और साल में और अच्छे स्कोर करो, फाइनल परसेंटेज सही हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट idiom of this video. So the last idiom for today's video is on the ball. So being on the ball means to be alert and deal with changes quickly. So what it means is somebody who is always aware of the changes or developments around him or her and are alert or ready to take quick actions. So we can say that that person is on the ball. So one has to be on the ball to be successful in business. One has to be on the ball to be successful in business. So we all are aware that in business, when we talk about business environment, there are a lot of factors that affect business. Can be government decisions, economic situations, products launched by the competition. So one always has to be aware of the different situations or the different business environment and take quick actions accordingly. So that is being on the ball. हिंदी में समझें तो ऑन द बॉल का मतलब हमेशा अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनका ध्यान रखना और जल्दी से हरकत में आ जाना या एक्शन लेना। ख़ास तौर से हमारे इस एग्जाम्पल में बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बिज़नेस है अगर, तो आपको हमेशा आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी आने वाली है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जीएसटी आई तो कई बिजनेसेस को चेंजेस करने पड़े, राइट? उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस फाइल करने पड़े और रिलेवेंट चेंजेस करने पड़े, राइट? सो वन हैज़ टू बी ऑन द बॉल टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, ठीक है? तो बीइंग ऑन द बॉल का मतलब क्या हो गया? सिचुएशन से अवेयर रहना और क्विक डिसीजन लेना, क्विक एक्शन लेना, ठीक है? So hope this video was useful to you guys, and I would continue to be making videos. So I would continue to make videos on different idioms, proverbs and phrases used in the English language. Plus I would also be making videos on grammar, probably topics like narration, voice, etc., tenses, etc., and help you in your journey in learning English and making you more fluent in the language. So if you did like my video, do hit the like button, share with your friends and subscribe for more videos. Thank you so much for joining and viewing this video today, guys.